today's topic is scalars and vectors. Basically, there are two different directional properties on basis of which physical quantities can be categorized. So basically, physical quantities को categorize करने के लिए उनको different directional properties की basis पर हम लोग differentiate कर सकते हैं. So डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ वो क्राइटेरिया है जिनकी बेसिस पर हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. सो द फर्स्ट वन इज स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज़ एंड द सेकंड वन वुड बी vectors or vector quantities. Scalars are simple. The quantities which are described only by their magnitude is called scalar quantities or scalars. Or magnitude means a number along with its unit. So कोई भी physical quantities जिसको हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सके. नाउ मैग्नीट्यूड क्या होता है? इन अ नंबर विद इट्स यूनिट. फॉर एग्जांपल आई हैव a packet of 2 kg of sugar, right? So 2 is a number and kg is a unit. Or I might say, whenever I say 10 seconds, it means 10 is a number, second is the unit. और अगर मैं कोई लेंथ लूँ, फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, एंड आई वुड से दिस लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर. सो इन तीनों एग्जाम्पल्स में मेरे पास एक एक नंबर आया और एक एक यूनिट यूज़ हुआ. मुझे यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है. सो देयरफॉर सच क्वांटिटीज़ विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड scalar or scalar quantity, right? So in this case just एक नंबर और साथ यूनिट काफ़ी होता है उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए. अगर मैं कहूँ 2 kg टू द नॉर्थ, सो इट डजंट मेक एनी सेंस. इन दिस केस कोई भी डायरेक्शन 2 kg 10 सेकेंड्स या 3 सेंटीमीटर्स के साथ हम नहीं ले सकते हैं, राइट? 3 सेंटीमीटर when considering the distance, not the displacement, right? So the second you can say category is vectors. Vector और vector quantity, इसके बारे में हो सकता है आप पहली दफ़ा सुन रहे हो. The quantities which are described by is magnitude as well as direction is called vector or vector quantities, right? So in this case, we have to find out the magnitude of the quantity as well as the direction of quantity. So it is first of all we have to discuss the representation. There are two ways to represent vector quantities. The symbolic representation, this kind of representation is mainly used in calculations or whenever you write some equation including vectors. And the graphical representation, the visual or graphical or you can say figurative kind of you can say representation of the vector. The first one is symbolic representation. Symbolically, vectors can be represented by either a bold-faced letter like this. I've wrote it like using a marker. आप marker भी use कर सकते हैं और otherwise अगर आप type करें then you will bold face it. Okay? So जब भी आप vectors लिखेंगे या तो आप इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं सो दैट यू कैन जस्ट यूज़ मार्कर टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर. जो भी वेक्टर क्वांटिटी आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर फोर्स लिखूँगी देन आई विल यूज़ अ बोल्ड एफ. ओके, मैं एफ को बोल्ड कर सकती हूँ. अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूँगी तो मैं एक बोल्ड सा स्मॉल ए बनाऊँगी, राइट? सो इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है ये नोटबुक पर या जब आप हैंड राइटिंग में लिखते हैं इसे तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और अदरवाइज यू हैव टू यूज़ अ मार्कर विच इज़ नॉट प्रॉपेबल इनफ. सो मेनली जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, the representation using arrows, okay, or a simple letter with an arrow above it. For example, a arrow, small a arrow or d arrow, etc. Let's suppose ये a, small a, d कोई vectors हैं. In this case, in this representation, we will just write the letter and place an arrow above it. आपकी बुक में भी और हम लोग भी जो प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें भी मोस्टली मैं ये रिप्रेजेंटेशन ही यूज़ करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू स्विच बिटवीन माय पेन एंड द मार्कर अगेन एंड अगेन, राइट? सो ये मोस्ट कॉमन यूज रिप्रेजेंटेशन है कि आप जब भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे देन आप वो वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल लिखेंगे और सिंबल के ऊपर एक स्मॉल एरो ड्रॉ कर देंगे, राइट?
ऑल्सो ये रिप्रेजेंटेशन भी यूज़ होती है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ की जाती है, या फिर कभी कभी एग्जाम पेपर्स में इस टाइप की रिप्रेजेंटेशंस यूज़ हो सकती हैं. कमिंग टूवर्ड्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphically vectors can be represented by an arrow. The length of the arrow describes its magnitude, and the direction of the arrowhead gives you the direction of the vector. So basically we are given two things: the length of the arrow, right, and the direction of the arrow. The tail of the arrow, the point where the arrow starts, gives you the initial or the origin of the vector. And head of the arrow gives you the final product or final, you can say, value of your vector. Okay, so tail वो point है जहाँ से आपका vector start होगा, जहाँ पर end होगा, that would be the head. So जहाँ पर भी head होगा वहाँ पर हम लोग arrow head draw करेंगे. लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू द मैग्नीट्यूड. अब मुझे बताएं, मेरे पास यहाँ पर लाइक 5 एरोज हैं, 1 2 3 4 5, सबकी लेंथ सेम है, बट क्या ये 5 एरो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नो. लेट्स सपोज आई हैव फोर्स which is equal to 5 Newton, and these arrows are representing this 5 Newton force. But the problem is 5 Newton force ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ ऑलरेडी गुड इन मैग्नीट्यूड. 5 हमारे पास नंबर है, एन हमारे पास यूनिट है, बट दे पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. देयरफॉर इट्स नेसेसरी टू इंक्लूड द डायरेक्शन एज वेल. अगर मैं सिर्फ फोर्स इक्वल्स टू 5 यूनिट लिखूंगी, देन दैट वुड बी वॉन्ट बी अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ माई फोर्स. In this case I have to include the direction, और इसीलिए graphical representation यूज़ होती है, ताकि इस केस में आप डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर सकें. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस वी हैव दिस 5 न्यूटन एरो, अगर मैं एक और एरो ड्रॉ करूं विच इज़ डबल इन लेंथ, इट मीन्स इट्स 10 Newton force, right? So this is a 5 Newton force acting towards the right. This is also a 5 Newton force acting in the upward direction. This is also a 5 Newton force acting between the north and the eastern side. And also this is a 5 Newton force heading somewhere else. And this is also a 5 Newton force heading downwards. So all of these are 5 Newton force, but their directions are different. Therefore, all these values, all these vector quantities, all these vectors are different, right? So बेसिकली जब भी हम लोग ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन ऑफ कोर्स हमें कोई रेफरेंस सिस्टम चाहिए होता है. सिर्फ वेक्टर्स ड्रॉ करके हम नहीं बता सकते कि डायरेक्शन क्या है या मैग्नीट्यूड क्या है. ज़रूरी नहीं है कि मैं वेक्टर ड्रॉ करने के बाद इसके साथ मेंशन करूँ 5 न्यूटन है. ओके, हमें कैसे पता चलेगा 5 न्यूटन है, या हमें कैसे पता चलेगा ये टूवर्ड्स द राइट पॉइंट कर रहा है, या इन दिस केस इसकी एब्सोल्यूट डायरेक्शन क्या है, कैसे पता लगेगा? फॉर दिस केस वी हैव टू ड्रॉ दीज वेक्टर in a coordinate system. So vectors are drawn on coordinate axes. These coordinate systems clearly specify the magnitude and direction of vector and make vector representation easier, right? So basically there are two types of coordinate systems: the geographical coordinate system and Cartesian coordinate system. इसमें हो सकता है आपने पहले भी काम किया हो, अपनी प्रीवियस क्लासेस में, हो सकता है आप मैथ्स में इस टाइप के वेक्टर्स ड्रॉ करते रहे हों. सो जब भी हम लोग अपने सर्टेन वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस करते हैं, देन इन दैट केस हम उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हैं एंड उसकी डायरेक्शन भी परफेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, राइट? In this case, first we have the geographical coordinate system. In geographical coordinate system we have north, south, east and west axis, right? So, एक हमारे पास ईस्ट आ जाएगा, एक साउथ, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, और जहाँ पर भी हमने अपना वेक्टर प्लेस करना होगा अकॉर्डिंग टू विच और इन रेफरेंस टू विच दैट एक्सिस हम अपना वेक्टर ड्रॉ करेंगे. सिमिलर इस केस विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. दोनों में जस्ट फ़र्क ये है, पहले आपके पास नॉर्थ था, अब आपके पास वाई है. पहले साउथ था, साउथ की जगह वाई प्राइम या माइनस वाई है. पहले आपके पास ईस्ट था, नाउ यू हैव एक्स. एंड पहले वेस्ट था, वेस्ट की जगह आपके पास एक्स प्राइम या फिर आप
माइनस एक्स भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा। सो बेसिकली जब भी आप इस एरो को इस यू कैन से इस साइड पर या फिर इस एक्सेस पर प्लेस करेंगी, देन इन दैट केस ये जो मार्किंग है ये स्पेसिफाई करेंगी कि आपके वेक्टर की लेंथ क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव 5 vector of 5 centimeters, right? So in this case the magnitude of this vector is 5 centimeter and its direction is 30 degree to the north, from east to north, ठीक है। So again there is a similar case with the Cartesian coordinate system. Just फर्क ये है कि यहाँ पर x minus x, y minus y है, and यहाँ पर east west north and south है। We have to consider an example. आपकी बुक में भी example mention की गई है, so just हम इसका overview ले लेते हैं. The representation of alkali tank as it moves to 50 meters from origin towards 30 degree north of east. In this case, now you see, here we are given the magnitude as well, okay. In this case हमारे पास magnitude भी given है, but हमारे पास साथ साथ direction भी given है. For the scalar quantities, magnitude was enough to represent a quantity, a scalar quantity of course, but for vector quantities we have to include the direction, we have to include the theta or the angle over here. Therefore, लेकिन हमें ये भी पता है कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है इस 50 मीटर्स को इस पेज पर ड्रॉ करना? ऑफ कोर्स नॉट. आई कैन नॉट ड्रॉ अ वेक्टर हुज लेंथ इज 50 मीटर ऑन दिस पेज, राइट, बिकॉज वो वेक्टर इस पेज से भी बाहर निकल जाएगा. सो ऐसे केस में कैसे पॉसिबल होगा कि मैं अपने वेक्टर को इस पेज पर ड्रॉ करूं? देयरफॉर आई हैव टू अप्लाई सम काइंड ऑफ स्केल कन्वर्जन्स ओवर हियर. इन दिस केस मैं कह सकती हूँ, अगर मैं अज्यूम करूँ 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इट मीन्स हर 10 सेंटीमीटर वेक्टर लेंथ के लिए मैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करूँगी, ओके. एंड देयरफॉर 50 सेंटीमीटर्स के लिए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है देन 10 मीटर है देन 1 सेंटीमीटर, एंड 50 मीटर्स है देन 5 सेंटीमीटर. देयरफॉर अगर मेरे एरो की लेंथ 50 मीटर्स है, इट मीन्स यहाँ पर जब मैं उसे ड्रॉ करूँगी तो मैं 50 मीटर्स ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं 5 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करूँगी, राइट. सो therefore the length would be 5 centimeter, and what would be the direction of that vector? It would be 30 degree from east to north. North of east का मतलब है from starting from east towards the north. So starting from east हमें 30 डिग्री काउंट करना है, एंड लेट्स सपोज यहाँ पर अगर 30 डिग्री बन रहा है देन ये हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, राइट. सो दिस डायरेक्शन वुड बी 30 degree north of east, and the magnitude or the length of the vector would be just 5 centimeter. इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 50 मीटर को 5 सेंटीमीटर कह दिया है. इट जस्ट मीन्स दैट हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी उस केस में 50 मीटर्स will be represented by 5 centimeter, okay. लेकिन जब आप लोग actual answer evaluate कर सकेंगे, then after evaluating the final answer you have to convert 5 centimeter back to 50 meter, okay. So 5 को just आप 10 से multiply कर देंगे and you will get 50 in terms of meters, राइट. तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है. जब भी आप लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, आप या तो ग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. मोस्टली आपकी बुक में भी ज़्यादातर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होगा. हो सकता है कुछ केसेस में, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज़ हो. सो यू हैव टू गेट यूज टू बोथ ऑफ दिस सिस्टम्स, राइट. सो I think this was all for today. Thank you so much everyone.